Ohm's law, it states that current is always directly proportional to potential difference applied across the conductor, keeping all physical conditions and temperature constant. Mathematically, I is directly proportional to V, or we can say V is directly proportional to I. By removing proportionality sign, converting it into equal, we need a constant R, which is known as constant of proportionality, and its name is resistance. SI unit of it according to this law is SI unit of resistance is ohm. But how can we define resistance? It is not that simple definition which we always use to calculate the constant definition. It is having its own definition and its own concept. What does resist means? Resist means to oppose. Now, in a conductor, we have applied potential difference and electrons start drifting towards the positive end of the conductor. So, resistance means that physical quantity which oppose this flow of electron. So, resistance, it is problem posed by conductor to the flow of इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में, उसके रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उन प्रॉब्लम्स को रेजिस्टेंस कहते हैं. मतलब रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है. देन a question arises, what is cause of resistance? So as I have shown you the sample of conductor has not only the free electrons but it has atoms also, which atoms are bind to their positions. This atom is also bind to its position, this atom also bind to its position, this is also, and they are bind to their positions and they can vibrate about their mean position. Atoms and ions of metallic conductor are bind to their positions and can vibrate about that position or about that mean position. They can vibrate to and fro about that position. While vibrating, electron tries to go from here and get collide with these atoms. So electrons during their flow can get collide with those vibrating atoms. जैसा कि आपकी किसी गेम में होता है, कंप्यूटर की गेम में, कि आपके गेम में इस तरीके से कोई एनिमी है जो ऊपर नीचे और आपको यहाँ से पास करना है, तो हो सकता है तो उस टाइम एटम ऊपर हो और आप पास कर जाओ, और हो सकता है एटम नीचे और आपकी कोलिजन हो जाए. सो कैन गेट कोलाइड विद दोज वाइब्रेटिंग एटम्स एंड दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक. क्योंकि ये कोलिजन्स इलास्टिक हैं तो
एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे टकराने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ख़त्म नहीं होता, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है, वो फिर से ट्राई करता है, हो सकता है निकल जाए, हो सकता है रुक जाए, फिर से वापस आ जाए, फिर से ट्राई करेगा, फिर से ट्राई करेगा। जब निकल जाएगा तो करंट का फ़्लो हो गया, नहीं निकल पाया तो करंट के फ़्लो में प्रॉब्लम आ गई, विच दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम टू द फ्लो of current, which is called resistance.